Okay, so now we are going to create some relationship between these tables or these data sets, okay, which have come from different CSV files. Now, what I wanted you to understand or know is that in data, whenever we create a data model, okay, there are two types of data set or two types of data which is there. One is called as a dimensional data, dimension data, and the other is called as factual data. Okay, dimensional data and factual data. Now, out of these seven tables which we have, tell me which tables do you think will have factual data and which tables will have dimensional data? And factual means fact. Factual means fact or numbers, you can say, which are Numericals. numerical or exact numbers, or you can say numbers which are coming from data which has happened in the past. Okay. Now, so which table has data which is numeric in nature, and that number makes some sense in terms of quantity, and we can value it or we can do some calculations with it. Yes. Just look at the content of each table, the list in each table, and you will be able to identify the answer. So let us go one by one, okay? And we will write a D or a F, okay? Uh, in front of each table so as to identify whether it is a dimensional data or it is a factual data. Shall we start? So in case of the first table, which is a salesperson table, what do you Dimensional data. Dimensional. it is dimensional? Yeah. Okay, Because it is not having any numerical figures. exactly. Numerical. It is not having any numerical figures. Okay. So I put a D in front of this. Second one, region. Again, D. Dimension. Again, dimension. Very good. Okay, let's skip these two tables for the time being and let's move to the right hand side of the data set. Okay. What about reseller table? Reseller Dimension. has business Dimension. type, city, and all. Again, it is the dimensional Dimension. data. What about the product table? Dimensional. Dimensional. Again, dimensional. And what about two here and two here? Yeah, there was one more table, which is the salesperson region. What is that? Sales person region. Salesperson region. Dimensional. Again, dimensional. Okay. So I'm putting a D over here also. Okay. Now I left the middle two purposefully. You know why? Because the sales and the target both are Factual. factuals. Very good. So we'll represent this with the blue color. So this table, the sales table, and this target table Both are factual. are factual. Both are having facts, both are having numbers. So this is also a factual table. This is also a factual table. तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल अप्लाई करेगा जो आपने पहले एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग डायमेंशन एंड मेजर. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल वही 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 है करेक्ट. ना जी, वही वही कॉन्सेप्ट है, उसी को कॉन्सेप्ट. वापस से हम रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं. डायमेंशंस एंड मेजर्स, मेजर्स को मेजर. मैंने फैक्ट बोल दिया. फैक्ट एंड मेजर आर सेम थिंग. करेक्ट. हाँ ठीक. So now whenever we are creating a model, we need to understand that each model will have some factual data, each model will have measures and dimensions. So our core, our base,
would be फैक्चुअल डेटा, तो इसलिए मैंने उसको सेंटर में रख दिया है। ठीक है। सो दिस ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन माय एंटायर डेटा सेट, बिकॉज अगर नंबर ही नहीं होंगे, है ना, अगर हमारे पास सेल्स का नंबर ही नहीं है या टारगेट ही नहीं है, तो हम इन सब टेबल का कोई यूज नहीं रह जाता है फिर, सेल्स पर्सन का, रीजन का, सेल्स पर्सन रीजन का, रीसेलर का, प्रोडक्ट का, because they are providing further information about this data. Am I right? Yes, yes. है ना? So what I said is कि my core data is the sales data, which is having the cost, employee key, order date, and all these things, and the sales amount. Correct? The core data is the sales data. The other table are providing further details about the factual data. If I don't have these factual tables, all the other tables are useless. Correct? Am I right? Correct, sir. Correct. हाँ. Sir, can't we have entire data in one sheet and can proceed for this visualization? You see? Can't we have the Uh, entire the, data in one the sheet? in one sheet, entire data in one sheet. But that way, the process of creating a relationship will be avoided. Yes, sir. But, sir, is it possible in a business to have the data belonging to different territories, different areas of work, In one different sheet. ventures, and all these things in one file and No, coming from one source? one. No, not at all. Not at all. Okay. So the salesperson will give the sales data, the regional manager will give the region-wise data. So Okay. then we will have some other data coming from the reseller. Then we have the product team, which will give the data about the products and all. We have the sales team. So there are different people working in different domains, and each person has its own area of work and expertise. So he will come with his report. He will come with his report, right? And Okay. when we have a joint meeting or a board meeting, Hmm. everyone will share their own Data. insights, correct? Their own data. What the secretary or the management has to do is they have to compile the data from all the sources and then create a consolidated report. Correct? Okay. So this is a practical scenario. This actually is the most what you can say uh, used data set in Power BI to teach Power BI and other visualizations, because this is near to actual data. When you work in any organization or any company and which is having multiple locations, multiple factories, multiple customers, resellers, distributors, then the data source will be multiple. And we need to understand, we need to learn how to create the relationship because Power BI may end up into getting into a wrong relationship, right? Is it clear? Yeah. Now, in the first day when we started Power BI, now it is almost 9 days. So I had told I asked you all and I had also told you that what is required to create a relationship uh, between two persons or anything. What is required? Common factor. Common factor, correct. Some unique, Sorry. yeah, some common unique data. हाँ, we need some common data, some common links, some common thoughts, Common some link. commonality is required, Hmm. right? Now, if I want to connect all the tables with the sales table, okay, then I should have something in common between all the data set. If there is nothing common, we cannot create a relationship. Is it clear? Yeah. Correct? So Hmm. what I need to do is simply I'll start one by one. So let us first connect the salesperson with the sales. So what is the common parameter in the salesperson and the sales table? So if we look at employee ID, is employee ID both there in both the tables? Employee key. Employee key is also there. So employee ID is not there in the sales table, but employee key is there. So we can select the employee key and drag and drop it here in the sales table. As I do that,
let me now remove the drawing, or let me do one thing. Let me just stop this. Just a minute. Let me first put this into the group because ये diagram बनाया है तो उसको डाल देते हैं for reference, and then I will remove this. Okay, so now I am removing the drawing. Sorry, now quickly we will create the relationship one by one. So first I am taking employee key and I am dragging and dropping it here in the employee key. Now, you see here new relationship. Okay, and let me do one thing. Okay, so you see the salesperson table, there is an employee key. In the to sales table, there is an employee key. What kind of relationship it is showing? What kind of relationship it is One showing? to many. One to many. One to many. Okay, is Shreyash there in the session? Shreyash. Shreyash, you are there? Okay, or There is there. yes. Sonakshi, can you explain why one to many is coming over here? Sonakshi. हाँ सर, एक्चुअली यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है बिकॉज एम्प्लॉय की का जो रिलेशन है वो यहाँ दूसरी टेबल में और से भी है। और से भी है मतलब? और टेबल कंटेंट और कॉलम से। नहीं, देखिए, सेल्स पर्सन में एम्प्लॉय की जो लिखा है 272, 277, 281, ये कितनी बार लिखा है? ये नंबर एम्प्लॉय की एक एक बार आ रहा है या रिपीट हो रहा है? एक एक बार आ रहा है। एक एक बार आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दे आर यूनिक, हम्म। करेक्ट। अभी आप सेल्स टेबल में देखिए, 282 कितनी बार आ रहा है? मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स। So here, salesperson में the employee key, salesperson in the sales table will be once only, right? They will have one हम्म। listing कि कौन कौन salesperson है, उसका employee key क्या है, एक ही बार नाम आएगा ना, दो बार नहीं आएगा। बट उसी salesperson ने कितना सेल्स किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर अलग अलग दिन सेल्स किया होगा तो बार बार उनका नाम आएगा। हम्म। So one table will have the employee key once and the other table will have multiple times. That is why the relationship is one to many. और अगर सर नीचे डिजिट्स अलग अलग होती तो वो मैनी टू मैनी होता क्या? नहीं, अभी देखिए, अभी एक काम करते हैं, हम इसको टेबल यहाँ पे कर देते हैं। लेट मी सेलेक्ट अ डिफरेंट टेबल, लेट्स से सेल्स पर्सन रीजन। अभी देखिए, सेल्स पर्सन रीजन में क्या हुआ, 272 इज अपियरिंग मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट। हाँ जी। और तो यहाँ पे भी मैनी इट टू इज मैनी। अपियरिंग मल्टीपल टाइम्स, तो क्या रिलेशनशिप हो गया? मैनी टू Many. मैनी, ठीक है सर। मैनी टू मैनी। हाँ जी। ओके, इफ आई सेलेक्ट रीजन, नाउ हियर रीजन and sales, correct? What is common in between them? Is there anything common? Everyone look at the data. Is there anything common between both the tables? Territory. Territory. Fourth column. Huh? Sales territory. Territory. Sales Sales territory. territory. Okay. So do we have the sales territory? Yes, we have the sales territory. So now अगर सेल्स टेरिटरी मान लो नहीं होता तो कोई रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश, सपोज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की सिलेक्ट करता हूँ, सेल्स टेरिटरी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कैन वी स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल by selecting the two keys which are not related to each other? The answer is no. But when I select the sales territory, here it is appearing only one time, one, two, three, but here it is appearing multiple times, correct? And it is not showing the complete data, क्योंकि आप बोलेंगे सर यहाँ तो 4 दिखा रहा है लेकिन इधर तो 4 है ही नहीं सेल्स टेरिटरी में। So there are 7 territories, but it is showing just a summary of the data, correct? But right now we were connecting the sales
person with the sales table. So again, I'm going back to the thing. It is employee key and we are connecting it with the employee key itself. So it'll be one to many relationship. Okay. Cross filter direction is single. Single means that the data will flow from salesperson to sales table. अगर आप इसको मल्टी या बोथ कर देते हैं तो दोनों तरीके से जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए. करेक्ट. So we want only single directional data to be flown. And once you see this, now I don't know, in my case, I'm not able to see the last three buttons, but are you able to see at the end, there is will be option of create relationship. You just click enter and you will see a line coming up. ठीक है, शायद मैंने एक एक्स्ट्रा आपको मार दिया. Do you see this relationship getting established? And it is showing one because there is only one unique item, and here it is showing star because there were many, and the data will flow from the salesperson to the sales table. That is why there is one direction. Is it clear? Yes. Now, similarly, in the region to the sales, in the region, we have the sales territory key. Here also we have the sales territory key which can drag and drop. Again, one to many because this region will have only one listing of all the regions, but the sales can have multiple listing coming from the regions. So we will create this relationship as well. Salesperson to region will have the sales territory key. It also has the employee key. Now it is your choice, whatever you want to create. So you are taking the sales territory key. Now it is showing many to many because the salesperson region will have the multiple sales key, and same thing here also. Even if you select the employee key, it will be many to many. So whatever way you want to connect, it will be many to many. And there is nothing wrong in it. Okay, so we can create the relationship. There is help section also. If you want to read more about it, you can go. It will take you to the Power BI website. You can read more about it if you want to. Okay, so this also is connected. Now it is both ways because there are many to many. Both ways you are getting star and star. Correct? Now, if I want to connect the target with the sales, what is the common key I have? Target with the sales. Is there anything common? Target. Actually, target versus sales, there is no common, but as salesperson, employee ID is connected with sales, and Employee. employee ID could be connected. Exactly. So, friend of friend is a friend. Right? Like we have mutual Yeah. friends Yeah. on Facebook और LinkedIn. तो हम देखते हैं कि हाँ इससे कनेक्ट करना, चलो कॉमन फ्रेंड्स में कौन आ रहा है. तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि Hmm. डायरेक्ट उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसका किसके साथ रिलेशनशिप है, आप उसके साथ कनेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाओगे. है ना. सो Correct. वी विल डू समथिंग लाइक दिस. सपोज आई से एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय की. नहीं आएगा. नहीं आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं. करेक्ट. इट नॉट गेट कनेक्टेड. But if I connect employee ID with the employee ID in the salesperson, ये दोनों टेबल को हम कनेक्ट कर सकते हैं. Yeah. ये तो सेम है. ठीक है. Many to one relationship is there. And now let me establish that connection. ठीक है. And now you see that they are connected. ठीक है. इसको हम थोड़ा सा
ये इधर कर देते हैं, तो ये लाइन जो है ये आपको अब दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर। For the connection, we need to drag and drop only, right? Na? हाँ For the connect, we need to drag and drop, right? हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, करेक्ट। Okay. सो नाउ सिंस दिस इज कनेक्टेड एंड दिस इज कनेक्टेड, तो ये भी आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। इनडायरेक्टली सेल्स और टारगेट आपस में कनेक्ट हो गया है, ठीक है। Now, next thing, last two tables, reseller and product. So in the reseller to sale, reseller key is the common factor. We can connect to the reseller key. Many to one relationship. Because in the sales table it is many, and in the reseller it is only once. So this is also connected. And the product. So in the product we have product key. In sales also we have product key. And many to one. Sales में many और उसमें one. सो अभी सारा ये मकड़ी का जल बन गया है। स्पाइडर नेट। ओके। आपने पूरी राजस्थानी भाषा यूज कर ली है। सर मेरे मेरे सेशंस कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। आई आई डोंट राइट अ स्क्रिप्ट एंड आई प्रैक्टिस एंड ऐसा कुछ नहीं है। जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ। ये मकड़ी का जाला वाली जो भाषा है पूरी राजस्थानी है। हाँ। चलो, अच्छी बात है। वो एक्चुअली से याद रहता है कि हाँ मकड़ी का जाल बन गया हमारा। सो दिस इज established। अगर ये नहीं होता ना, इफ यू डोंट कनेक्ट, देन इफ वी क्रिएट एनी table, now I'll just show you one visual, then we'll close this session. Now let's say if we want to connect a table, we want to create a table, and in that table we will take the data from different sheets. Let's say product wise sales मुझे निकालना है, तो I'll select the product key list from here. So all the products will appear in the table. Product name will appear in the. So ये product आ गए, इतने सारे product हैं, ठीक है। Let's say we will take the subcategory instead of product. Subcategory थोड़ा कम आएगा. So these are the subcategories, ठीक है। These are the subcategories. Now I want to see the subcategory wise sales. So I'll select sales. Now I will get the subcategory wise sales total. ये देखिए ये total आ गया 77,75,49,391। ये 7 करोड़ का सेल्स है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट है, सपोज आई वांट टू सी द प्रोडक्ट आल्सो, सो आई कैन ऐड द प्रोडक्ट एज वेल। So now, and I'll put the product after the subcategory. So it will show me subcategory and product and the sales. Okay. But this is appearing multiple times. That means in the subcategory bib shorts, one, two, three, four, there are three products. Men's bib short, L, M, S. तो इसका साइज है, ठीक है। Now if we can convert this into a matrix also. So if we convert this into a matrix, तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। So it will show the category and the subcategory on the column like this, which is not looking very good. So we can remove the product. So idea is this. Now, if the relationship, suppose I just delete one relationship between the product and the subcategory. ये जो प्रोडक्ट और रिलेशन, इसको थोड़ी देर के लिए हम डिलीट कर देते हैं। अब आप देखिएगा क्या हो गया है। सी दिस, व्हाट इज द नंबर वी आर गेटिंग इन ऑल द सब कैटेगरीज, टोटल ऑफ सेल्स। क्योंकि उसने Yes, sir. क्या करा, आपने प्रोडक्ट कैटेगरी उठाया और सेल्स उठाया, तो सेल्स का टोटल करके उसने सब जगह सेम टोटल डाल दिया, क्योंकि इन दोनों में आपस में कहीं कोई कनेक्ट अभी नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इट, इट इज गिविंग द आंसर, सेम आंसर फॉर ऑल। मेक सेंस टू एवरीवन? So figures are same. फिगर्स आर सेम बिकॉज देर इज नो मकड़ी का जाल, No connection. Right, right, right. करेक्ट। एंड एज द मोमेंट यू कनेक्ट इट,
सो हाउ डू वी कनेक्ट प्रोडक्ट की से प्रोडक्ट की को? ड्रैग एंड ड्रॉप। हम्म वंस आई वाज टीचिंग दिस इन कॉलेज, और उस समय वो एक कटरीना और सलमान खान का मूवी आया था। आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी, बट उसका गाना बहुत फेमस हुआ था। वो गाना इट स्टिल अ फेमस सॉन्ग। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने वो गाना गा दिया, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट पता नहीं याद है हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गाना जरूर याद आ गया। और वो गाना मुझे याद है, वो ये था, कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। तो मैंने कहा देखो, कच्ची डोरियों से हमने इन सबको बांध रखा है। दिल्ली या गल्ला। दिल दी ये गल्ला, करेक्ट। तो ये देखो, ये फिर अब जैसे डोरियों से बांध दिया तो फिर आंसर भी सही आ गया। करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू बिल्ड द स्मॉल कंसेप्ट्स एंड गो अहेड। ये वाला जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है, व्हाट डेटा सेट वी आर वर्किंग, इट्स अ वेरी हैवी डेटा सेट। आपको दिखने में इजी लग रहा होगा क्योंकि मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ और आप लोग कर रहे हैं, बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, रादर आई वुड से नॉट डिफिकल्ट, बट इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें बनाएंगे। एंड आई थिंक यू माइट हैव नॉट नोटिस्ड, बट मैंने एक मैंने ग्रुप में शायद शेयर नहीं किया। ठीक है, मैं कर देता हूँ। आई विल शो यू वन वेबसाइट हियर। इज माई वेब ब्राउजर विजिबल टू ऑल? Yeah. है ना? इसको देखिएगा। नो नो, नहीं, वेब तो नहीं आ रहा। नहीं आ वो रहा? एक वो एक नहीं, मिनट, एक आपका मिनट। सिर्फ वही स्क्रीन। हाँ, आने दो, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। जैसे ये जो डाटा है लाइव, मतलब एक्चुअल डाटा है या हाइपोथेटिकल डाटा है? नहीं नहीं, हाइपोथेटिकल डेटा है, लेकिन इसका वो जो है बेस जो है वो एक्चुअल है। एडवेंचर वर्क्स साइकिल एक यूएस में कंपनी है, पर उसका डेटा एक्चुअल नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये सर, हाँ, आया। Microsoft Fabric community. It is a Microsoft community wherein all the educators and all they prepare their things and put it there, है ना? तो ये पब्लिक यूज के लिए है। ये जो डेटा सेट, ये जो आपको दिख रहा है डैशबोर्ड, ये इसी डेटा से बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ये अपना एडवेंचर वर्क्स साइकिल से। ठीक है, एंड देर आर 15 पेज रिपोर्ट इट इज। ठीक है, इट इज 15 पेज रिपोर्ट। देखो, एडवेंचर वर्क सेल्स डैशबोर्ड 2023 एडिशन। So this is the depth of anything, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। और ये बहुत यूनिक डेटा सेट, बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे बाइक से तो बाइक का फोटो आ रहा है, कंपोनेंट तो कंपोनेंट का फोटो आ रहा है, क्लोथिंग है, और इसके अंदर शेड्स है। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिस डेटा सेट इज देयर, एंड देयर लॉट ऑफ calculations and combinations which are there, which is there. So I'll share this link in the group for you to explore the things, and we will do one by piece by piece। इसलिए इसको, इस पूरे डेटा सेट को करने में एक हफ्ता में लग जाएगा। हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन ये कर लिया तो इसका मतलब पावर बीआई अच्छे से आ गया आपको। दिस अच्छा। इज इट। सो दिस इट इज़ वेरी सी कोरिलेशन बिटवीन बाइक्स एंड क्लोथिंग। तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ वेरी मच The इंटरेस्टिंग important एंड thing, so इंसाइटफुल। important thing is मकड़ी का जाल, मतलब you have connect करना proper, right? Is it? सॉरी? Important thing is कि मकड़ी का जाल proper connect करना। ये नहीं हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो करना। इम्पोर्ट वो कनेक्ट नहीं करा तो फिर द डेटा विल नॉट फेच प्रॉपरली, राइट राइट। है ना? एंड देर आर वेज टू आइडेंटिफाई। वो आप जब करते हैं ना, तभी आपको समझ में आता है कि वेयर आई हैव डन द मिस्टेक। ठीक बात है। दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल विच आई शोन यू। अब नाउ व्हेन वी वर्क मोर ऑन इट, हो सकता है कि हमने जो कनेक्ट करा है वो सही से नहीं है, और इससे और बेटर तरीके से हो सके। तो वो एक्सप्लोरेशन है, इट कम्स विथ प्रैक्टिस एंड लाइक दैट ओनली एक्सप्लोरिंग थिंग्स। ठीक है, सो वी विल नाउ क्लोज दिस सेशन हियर।
Sir, like in the canvas where we make charts and these all, Mm-hmm. it seems to be a very limited space. So, Uh-huh. if we can keep on making these charts and show that way, because as you are showing over here, it is Mm-hmm. like, if I want we want to make around 20 different charts. See, वही Can मैं बोल that रहा be? हूँ. Then you have to create on different pages. See, this report, it is a 15-page report. A Okay. viewer cannot see everything in one thing. One go. हाँ, one go. So you have to create the different pages and this thing. तो एक मूवी जो 3 घंटे की आप देखते हो, उसकी उसमें कितने सारे सीन्स होते हैं, कितने सारे टेक्स होते हैं, तो वो एक साथ Hmm. तो नहीं होते है ना, शूट सारे Correct. पार्ट्स में होता है. तो सेम थिंग, वी इट इज स्टोरी टेलिंग. मैंने ये कोर्स का नाम ही रखा आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है. तो वी कैन नॉट शो एवरीथिंग इन वन फ्रेम. तो Hmm. आपको अलग अलग पेज बनाना पड़ेगा. देखो कितना कितना डिटेल्ड वर्किंग है इसके पीछे, है ना. Correct. तो देर वाह. आर 15 पेजेस, तो हर एक पेज में देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स. बट आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि देर आर ओवरलैपिंग या सर ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन या सर क्लमजी है. ये चार्ट किससे बना है सर, ये वाला चार्ट? सर ये बॉक्स एंड विस्कर चार्ट है. हम करेंगे ये भी. ये वो आपको ट्रेडिंग में भी काम में आता है. अच्छा. हाँ, कैंडल स्टिक बोलते हैं इसे. कैंडल सी. हाँ. एंड दिस इज डिसीजन ट्री. मतलब वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस. इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैं कराऊंगा. Okay. वही है सर, 30 days में तो बहुत सारा चीज करना है. हाँ, मतलब वो 30 डेज कैसे खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन यस, वी विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. Correct. सर ओके. एक सब ये आज मैं एक चीज पूछना भूल गया था साहब, ये आपने ब्लिंकिट डैशबोर्ड के अंदर हम्म. एक आउटपुट लोकेशन वाला एक ये बनाया हुआ है हम्म. चार्ट. कैन सी माय, शुड आई एक शेयर मिनट. माय? आई जस्ट शो माइन. एक मिनट है ना, क्योंकि वो सबका. डैशबोर्ड के अंदर आउटपुट लोकेशन है ना सब, एक चार्ट. एक मिनट से बता रहा हूँ. उसमें एक्चुअली देर वॉज समथिंग विच आई डिड नॉट टेल यू एंड आई वॉन्टेड टू टेल वंस एवरीवन हैज ट्राइड, बट स्टिल. हाँ, अब आप क्या बोल रहे हैं. तो ये वाला जो चार्ट है ना सब, ये वाला बीच में, हाँ, फैट ये कौन सा. चार्ट, ये चार्ट कैसे बनाया सर ये? ये वाला. नहीं, दिस वन, आउटपुट लोकेशन. आउटलुक एस्टेब्लिशमेंट ये. नो नो, नहीं इस ऊपर वाला, इस ऊपर वाला. आउटलेट लोकेशन ये वाला. या ये जो इसमें बार जो है, ये बड़ी है, दिस. छोटी है, या फिर छोटी दिस. है. हाँ, ये वाला जो है, दिस इज दिस वन. दिस इज कॉल्ड एज फनल चार्ट. फनल चार्ट. हाँ, अभी हमने सारे कहाँ करे हैं. हाँ बहुत तो सारा फिर. एक्सप्लोर करना बाकी है अभी. हाँ, तो हाँ दिस तो फनल. अभी. तो ये बताता है कि आपका जो 3 टायर है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, हाँ उसमें हाँ. 100% सेल्स में से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है. अच्छा अच्छा. सो टायर 1 इज कंट्रीब्यूटिंग टू 71.3%, टायर अच्छा टू अच्छा. उससे ज्यादा है, टायर 3 100% हाँ, है. अच्छा So फनल assuming चार्ट. tier 3 to be 100%, how much is tier 2 of tier 3 and how much is tier 1 of tier 3, ऐसा है. अच्छा अच्छा, तो फनल फनल चार्ट है, है. तो वी आर फनलिंग इट आउट, ऐसा है. हाँ तो ये इसमें एंड कंफ्यूज देर आर होता लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इन दिस. मतलब इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस भी हमें करनी है. सो वी विल डू दैट. मैं एक ये डेक्स फंक्शन पे भी एक क्लास रखूंगा. एक क्लास नहीं, मल्टीपल क्लासेस होंगी. एंड टुमारो वी विल लर्न सम डेक्स आल्सो एंड आई विल शेयर सम मटेरियल टू रीड फॉर ऑल ऑफ यू इन द ग्रुप. तो ठीक. जब भी आपको टाइम मिले, गो टू दैट आल्सो, बिकॉज दिस विल बी अ लिमिटेड लर्निंग इफ यू जस्ट डू व्हाट आई एम डूइंग.